Welcome to this video on bamboo bottle and similar container making. Bamboo made bottle and similar containers have recently gathered the limelight in the social media and market. It's a wonderful product made from bamboo. Before we get to know more about this product, let us know some facts about the wonder grass called bamboo. Bamboo is the fastest growing plant on this planet. Bamboo releases 35% more oxygen than trees. Globally, there are more than 1,400 species of bamboo. Global market of bamboo-based products is estimated to be more than $35 billion. Bamboo supports livelihood of 2.5 billion people. There are more than 1,500 documented uses of bamboo. Bamboo can be harvested in 3 to 5 years, making it a viable substitute of wood. Bamboo is light in weight but stronger material. Its tensile strength exceeds that of mild steel. No wonder why bamboo is called wonder grass. Bamboo bottle and similar container is a unique eco-friendly product made from bamboo. It has great potential to reduce plastic pollution. Though many concepts of such products were presented earlier, cluster-level product development, bulk production, and marketing of bamboo bottle and similar container products in India was first started in Tripura under technical and financial support of Tripura Rehabilitation Plantation Corporation Limited or TRPC, a Government of Tripura undertaking. Contribution of BCDA Agartala and FRCLE Agartala are also noteworthy. Let us explore more about these bamboo bottles and their production technique. The construction of bamboo bottle or similar container is basically a normal metal or glass container enclosed in a bamboo enclosure, giving the whole unit durability, strength, heat resistance, and a unique look and feel. The size can be customized according to the need, utility, and the shape of the inner container. Various items like water, beverages, hot soup, spices powder, sugar, salt, etc. can be stored in these bamboo bottles or containers. Let us know the key raw materials needed to make bamboo bottle and similar container product. Bamboo pole to make the outer enclosure. Container made of steel, copper or glass as the inner part. Wooden base of suitable texture in case bamboo node is avoided. Adhesive, lime, salt, turmeric, neem, etc. for treatment of bamboo. Varnish, melamine or any suitable protective water-resistant coating. Consumables like sandpaper, grinder wheel, water, desiccant, antibacterial agent, packaging material, etc. Now let us know the tools, implements and arrangements needed for production of bamboo bottle or similar container product. Cutting tool like hand saw and cut-off saw, hand reel, angle grinder, sanding machine, customized set of chisel as per the need, turning lathe and mortizer, but these are optional, diffusion treatment vessel with heating arrangement, smoke chamber depending on capacity, polishing and buffing tool, spray machine with pressure or vacuum tank for lacquering and varnishing, a dust-free drying arrangement, jigs, fixtures, measuring tools, etc. Product handling, packaging and storage area based on the production capacity, personal protective equipment, first aid, fire extinguisher, etc. The artisan or producer of this product is called bamboo bottle and similar container maker. A bamboo bottle and similar container maker is the one who processes the bamboo to make an enclosure or capsule or casing of desired dimension, inserts and fits a specific type of container or bottle or jar in it, and completes with a snug fitting, leak-proof finish using a series of technique and small tools, maintaining the product quality, safety and durability. Let us now understand the manufacturing process of bamboo bottle and similar container product.
There are broadly three steps of production. Primary processing, where the raw materials are cut, treated, and prepared as per the desired dimension and specification. Secondary processing, where the primary parts are assembled, fixed, and fitted. Tertiary processing, where the assembled product is finely polished, coated with waterproof layer, dried, and packaged. Let us see these steps in detail. Mature bamboo culm of suitable diameter, thickness, and internodal length shall be selected for bamboo bottle making. Species like Bambusa vulgaris, Bambusa bulqua, Dendrocalamus maltone, etc. are the preferred species. Select a bamboo pole whose outer diameter is at least 10 mm more than the outer diameter of the container to be inserted. Thickness of the bamboo shall also be at least 8 mm. The bamboo pole shall be analyzed logically so as to get the maximum usable cut pieces for making the bamboo bottles. The bamboo poles are cut using a cutting tool like cut-off saw. The rotary cutter ideally shall have TCT blade with at least 90 teeth. The cut bamboo cylinders are then treated in treatment bath using natural ingredients like neem, turmeric, edible salt, soda, etc. Generally, a 2% volume by volume ratio with water is maintained for batch treatment. Fresh treatment bath is prepared every time for a new batch. The vessel containing water and the ingredients are heated to temperature above 80 degrees centigrade, and the freshly cut bamboo cylinders are immersed completely in the solution. This process of treatment is called diffusion. This treatment is done to reduce fungal and borer attack on bamboo. After treating the bamboo in the hot solution for about 2 hours, the solution is left to cool down. The treated bamboo cylinders are then taken out and kept for drying. After desired drying of moisture content to not more than 10%, the treated bamboo cylinders are kept in a dry place for further processing. The wood material to be used for making the base of the bottle can also be treated along with the bamboo. The bamboo is then treated in smoke chambers, where the bamboo is treated with limited supply of oxygen, thus converting the starch content in the bamboo into non-edible form. The smoking treatment can also be conducted before sizing the bamboo pole. This is essential in case of small producers where smokehouse is available only as a common facility in the cluster. The treated bamboo cylinders are ready for next level of processing. Marking is made on the cross section of the bamboo cylinder uniformly so as to match the outer circumference of the container to be inserted. Before further processing of bamboo, suitability of the identified bamboo cylinder material is assessed based on the minimum residual thickness, that is, the thickness between marking and the outer diameter of the bamboo. Next, the extra biomass from the inner surface of bamboo cylinder is removed uniformly so as to match the marking. The container is carefully inserted in the bamboo cylinder with correct positioning and placing. Both the parts are attached correctly, maintaining the line of joint as per making. Different set of chisel, rotary grinder, sander, etc. are used in this operation.
Biomass removal is continued until the container very closely fits inside the bamboo cylinder. Water-resistant adhesive is then uniformly applied on the inner concave surface of bamboo with minimum spill out. Appropriate joining bit or nail is inserted if required. Glue spillouts or any unwanted marks on the surface of the assembled piece is then cleaned or wiped out. The next step is to perform planing, curving, engraving and sanding operations on the assembled bamboo-based material. Removal of green bamboo layer and planing of bamboo outer surface are carried out in correct sequence to ensure optimal result, minimal wastage and least chance of errors or damage to the assembled bamboo material. This operation can be done manually using hand tools or in machines like turning lathe and mortiser. Same way, curving and engraving on the bamboo surface can be undertaken based on requirement of the design. The assembled product is then subject to sanding and polishing using power tools and manually to smoothen the surface. Sandpapers shall be used in correct sequence from coarser grit to gradually finer grit until the desired level of surface smoothness is achieved. Any unwanted extra edges are removed neatly using tool like chisel to match the dimension as per given design and a fine finished look. Filler and glue are applied to fix the joints, unwanted grooves wherever required, especially in the joints. The lacquer or waterproof coating solution is prepared as per manufacturer's direction. Appropriate quantity of thinner is added to maintain the viscosity at optimum level. The solution is applied on the bamboo bottle outer surface uniformly and carefully without touching the inner container. The bamboo bottle is handled properly while doing varnishing. The product is then dried uniformly and completely in a dust-free area. The quality of the final product is checked thoroughly based on the desired specifications. The last step is packing the finished product. Appropriate quantity of natural antifungal or antibacterial substance like dried neem leaves, a desiccant dehumidifier like silica gel pouch is inserted inside the bottle or container and the cap is closed. The bamboo bottle or similar container is then inserted into the designated packet or box as per the appropriate level or stock keeping unit. The bamboo bottle is ready for dispatch. The producers should conform to basic safety norms while working with the sharp tools, electrical parts, dust, etc. They should use personal protective equipment wherever necessary. Social distancing norms should be followed as per the government guideline.
Group of artisans working in a production center should follow the supervisor's instruction. They should work in a team having coordination among each other in the production line. An artisan should maintain the work area clean after a particular operation. Tripura Rehabilitation Plantation Corporation Limited is supporting the artisan groups across different parts of Tripura in bamboo bottle production and marketing. The products are so unique that the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, has also endorsed the bamboo bottle and its producers in his Mann Ki Baat program held on 25th July 2020. यानी बांस कितनी बड़ी मात्रा में होता है। अब इसी बांस से त्रिपुरा, मणिपुर, असम के कारीगरों ने हाई क्वालिटी की पानी की बोतल और टिफिन बॉक्स बनाना शुरू किया है बाम्बू से। आप अगर इनकी क्वालिटी देखेंगे तो भरोसा नहीं होगा कि बांस की बोतलें भी इतनी शानदार हो सकती हैं और फिर ये बोतलें इको फ्रेंडली भी हैं। Honorable Chief Minister of Tripura, Shri Biplab Kumar Dev, took an extra effort in promoting the bamboo and bamboo products across different platforms. त्रिपुरा के जो प्राकृतिक संपदा है बैम्बू को काम पे लगा के जो प्रधानमंत्री चाहते हैं, जो बैम्बू बेस्ड जो इंडस्ट्रीज है, इसकी जो सामान इसमें जो पैसा 1 लाख करोड़ रुपया बाहर चली जाती है, उसको रोकना है। और वो रोकने का काम नॉर्थ ईस्ट सबसे ज़्यादा कर सकती है, क्योंकि ये प्रोडक्शन हमारी यहाँ होती है। तो इसलिए हम जो पारदर्शिता के साथ मार्केट को से लेके अंतिम व्यक्ति जो इसको बनाने वाला है उनको जोड़ देंगे। TRPC is working as a facilitating agency to supply the treated bamboo and inner containers to the artisan groups. Not only this, TRPC has already established linkages with large number of buyers across India and in turn providing buyback support to the small producers. TRPC is exploring more market channels for reaching out to a large base of consumers. This is a sustainable model of development adopted by TRPC in promoting the bamboo bottles and its producers, and it started from the time when the pandemic engulfed everybody, reducing the opportunities of livelihood. Let us learn more about this initiative from the Managing Director of TRPC. नमस्कार, मैं हूँ प्रसाद राव, मैनेजिंग डायरेक्टर TRPC। बेसिकली मैं 2010 बैच का इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का ऑफिसर हूँ त्रिपुरा कैडर से। लोगों को एडिशनल इनकम जनरेशन ये करने के लिए, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए 3 यूनिक चीज़ों में इनोवेटिवली यूनिक चीज़ बना के भी बिजनेस स्टार्ट किया है। इको फ्रेंडली ब्रूम विथ बैम्बू हैंडल, दूसरा है बैम्बू बॉटल्स, तीसरा है बैम्बू यूटेंसिल्स एंड बैम्बू कटलरी। ब्रूम्स है और ब्रूम हैंडल्स है और बैम्बू बॉटल्स जो है वो ऑलरेडी हम लोग डेवलप करके मार्केट कर रहे हैं। ये मार्केटिंग के लिए हम लोग नेशनल लेवल में जितना भी ट्राइब्स इंडिया का आउटलेट्स है वो आउटलेट्स के थ्रू हम लोग मार्केट कर रहा है। उसके अलावा जितना भी इंडिया में प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है उन लोगों के थ्रू टाई अप होके काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हम ऑल ओवर द कंट्री देख रहा है इस प्रोडक्ट के लिए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया भी हो, नहीं तो इन द वर्ल्ड भी हो, ये कॉन्सेप्ट ये है। हमारा साथ में कुछ टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स है, BCD करके एक इंस्टीट्यूट है और एक इंस्टीट्यूट है FRC लेकर के हम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट का, उन दोनों का सहयोगिता देके एक कंबाइंड कोलैबोरेटिव एफर्ट में हम लोग इसका कॉन्सेप्चुअलाइज किया है। कॉन्सेप्चुअलाइज करके इसका एक मॉडल बनाया है। मॉडल बनाने के बाद वो प्रधानमंत्री वंदन विकास कार्यक्रम के थ्रू ये जो प्रोटोटाइप बनाया है उसके हिसाब से हम लोग ट्रेनिंग वगैरह जो आर्टिस्ट है, लोकल आर्टिस्ट है, ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेडिशनल बहुत अच्छा बैम्बू आर्टिस्ट है, उनको बॉटल मेकिंग टेक्नोलॉजी में एज पर रिक्वायरमेंट अगर कुछ लोगों को चाहिए तो 2 दिन के लिए भी ट्रेनिंग दिया है, कुछ लोगों को चाहिए तो 4 दिन के भी ट्रेनिंग दिया है, कुछ लोगों को चाहिए तो
वो 1 महीने का भी ट्रेनिंग दिया है डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू। वो ट्रेनिंग देने के बाद ये वाला बॉटल्स और कुछ कंटेनर्स, बैम्बू कंटेनर्स लाइक हनी बॉटल्स के लिए, नहीं तो कोई भी स्पाइसेस, लो वैल्यू हाई वैल्यू चीज़ स्टोर करने के लिए जो बॉटल चाहिए पैकिंग मटेरियल के हिसाब से हम लोग इस तरह का सामान भी हम लोग ये बनाया है। इसके लिए भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस पूरा इंडिया से और थ्रू द वर्ल्ड भी इनफैक्ट ये आया है। ये चीज़ों में भी हमने सिर्फ बॉटल बनाना है, ये बॉटल के साथ साथ एक अच्छा चीज़ जो कस्टमर के लिए जो देने से उसके हेल्थ के लिए बेनिफिट होगा, इस तरह का चीज़ हम लोग इनकॉर्पोरेट किया है। ये बैम्बू का कॉपर बॉटल का ये है। और ये वाला आइटम बनाने के लिए हम लोग लगभग सो फार 500 लोगों का ट्रेनिंग दे चुका है। 300 लोगों को वंदन विकास कार्यक्रम के थ्रू खांचरपुर में फॉरेस्ट में जो गलिंग करता है ट्राइबल जूनियर्स, उन लोगों को हम लोग ट्रेनिंग दे चुका है। और यहाँ पे अगरतला के आसपास में 4 क्लस्टर्स में, एक है सिमना में, एक है काली बाजार बमोतिया में, एक है नलचर में, 3 बैम्बू क्लस्टर्स में लगभग 200 लोगों का ट्रेनिंग देके अभी प्रोडक्शन भी हम लोग शुरू किया है। अभी सक्सेसफुली हम लोग टीआरपीसी के दौरान 1500 बॉटल को डिफरेंट एजेंसीज को थ्रू आउट इंडिया हम लोग बेच के मार्केट कर चुका है। और बहुत सारे स्टेट से जितना भी वाइल्ड लाइफ एरियाज है, नेशनल पार्क है, सैंक्चुरीज है, वहाँ पे अपना सॉवरेन शॉप्स में बेचने के लिए भी बहुत सारे स्टेट्स का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमसे अप्रोच कर रहा है। इस तरह का लॉट ऑफ रेस्पॉन्स आ रहा है। हम लोग भी कैपेसिटी बढ़ा रहा है, साथ साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कर रहा है इसका, और भी क्वालिटी बढ़ाने के लिए और भी मॉडल्स बनाने के लिए ये कर रहा है। पैंडेमिक में ऑप्शंस फॉर जनरेटिंग द लाइवलीहुड बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। उसी टाइम में हम लोग ये वाला एक्टिविटीज़ को टेकअप करके इंटीरियर एरिया में जहाँ पे पूर फॉरेस्ट पूर ट्राइबल पीपल रहता है, उन लोगों के अंदर में टेक्नोलॉजी लेके जाके उनको सिखा के ये एक्टिविटीज़ उन लोगों से करवा के उनको इनकम जनरेशन, एडिशनल इनकम जनरेशन करने के लिए ये एक्टिविटीज़ हम लोग टेकअप किया है। इसलिए यहाँ पे जितना भी गवर्नमेंट मैकेनिज्म्स है सभी लोग जनरसली रेस्पॉन्ड किया है, हमको सपोर्ट किया है, मदद किया है। No wonder, among a growing buyer base, Bollywood actress Raveena Tandon took to her Twitter handle appreciating the product and thanking the Honorable CM of Tripura. While TRPC Limited continues to expand the production base, we request you to please use bamboo bottle product and contribute your part in promoting an eco-friendly earth and an economically empowered society. For bulk or institutional orders or any technical help, please get in touch with TRPC Limited. Bamboo bottle maker. Bamboo bottle maker. One bottles now. I'm a bamboo bottle maker. I'm a bamboo bottle maker.